प्रोफेसर राम गोपाल यादव। श्रीमान, मैं आजाद साहब को सुन रहा था और श्री शमशेर सिंह जी को। कश्मीर की समस्या अब इतनी आसान नहीं रह गई है कि हम लोगों को कुछ सुविधाएं दे दें वहाँ और वो समस्या का निराकरण हो जाए। जिस तरह का जहर वहाँ के लोगों के मन में, दिल और दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, उसके चलते चाहे जितनी आप सुविधाएं दें, मुझे लगता नहीं कि उसके मूल स्रोत है वहाँ जब तक नहीं स्ट्राइक करेंगे तब तक कश्मीर में कुछ भी आप नहीं कर सकते। आखिर ये समस्या पैदा क्यों हुई, ये सब जानते हैं। मैं पिछली हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत संक्षेप में ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि हम लोगों से गलतियां हुई हैं अतीत में और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं अब सब लोग। देश का पार्टीशन, हम समाजवादी तो शुरू से ही विरोध में थे। ये विभाजन जो हुआ वो नासूर बन गया देश के, भारत में, और इसका नतीजा ये हुआ कि 47 से लेके अब तक कई बार युद्ध हो चुके पाकिस्तान से, और युद्ध के बाद की स्थिति से भी हम लाभ उठा सकते थे और पाकिस्तान को इस स्थिति में कर सकते थे कि वो कोई हरकत कश्मीर में न कर सके। ऐसी स्थितियां आई, उनको हमने गंवा दिया। देश में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, देसी रियासतें थी, सब गृह मंत्रालय के अधीन थी। सरदार पटेल साहब के अधीन जितनी आई सब ठीक हो गई। केवल कश्मीर को विदेश मंत्रालय के अंदर रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और युद्ध के बाद इसको दे दिया, यूएन में मामला रेफर कर दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। जब हमारी सेनाएं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए बढ़ रही थीं और कुछ दिन और रुक जाते अगर पंडित जी, तो जो मुजफ्फराबाद और मीरपुर है सब हमारे इसमें होता। ये बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सजा भोग रहे हैं हम। इसके बाद 65 में युद्ध हुआ। आप जानते हैं कि हमारी सेनाएं लाहौर में इच्छोगिल नहर के इस वाले किनारे पर पहुंच गई थी, जहां से राइफल की गोली भी कश्मीर लाहौर में जा सकती थी। सियालकोट के बिल्कुल नॉक करने लगी थी जाके हमारी आर्मी। जैसलमेर वाले इलाके में सारे रेगिस्तानी इलाके को पार करके, लड़के मर के किनारे पहुंच गए पाकिस्तान। अगर ताशकंद समझौते के जरिए जीती हुई जमीन को वापस नहीं दिया जाता तो कभी का पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी। जानता था कि एक दिन में लाहौर चला जाएगा, सियालकोट चला जाएगा और इधर वाले हिस्से में भी हिंदुस्तान की आर्मी आ जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतियां हमसे हुई हैं। और 71 के युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारी कैद में थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। अगर शिमला समझौते में थोड़ा सा और सख्ती की जाती, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने में उनके लोग थे कि हम उसको दबा के कुछ और ले सकते थे, लेकिन इतने बड़े तादाद में छोड़ दिया गया और जो समझौता हुआ उसका भी पालन पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। ये जो 65 की बात की थी मैंने ताशकंद की, आप जानते हैं कि गिलगित से लेके ये सारा इलाका उधर कश्मीर में भी हमारे उसमें आ गया था। अगर वो हमारे पास रहता तो हमारे सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर पे मरना ही नहीं पड़ता रोजाना, कोई जरूरत नहीं थी, वहां होती हमारी सेना। मुझे याद है एक दिन मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, मैं बैठा हुआ था 2 कृष्णा मेनन मार्ग पर
तो फारूक अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में कश्मीर के सारे दलों के एमपी, कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब आए वहां और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि सन 47 के बाद पहली बार कश्मीर में पिछले 4 दिन से हमारी बॉर्डर पे कहीं गोली नहीं चल रही है और कोई आदमी नहीं मारा जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त जब वो गए थे सियाचिन, तो वहां गोली पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। तो रक्षा मंत्री ने ये पूछा, लेफ्टिनेंट जनरल थे सिंह साहब, कि ये आवाज़ काहे की आ रही? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान गोलियां चला रहा है, बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? ये उन्हें तो तब उन्होंने बताया कि हमें ये हुक्म नहीं है कि हम इस तरह से वो करें। उन्होंने कहा आप डू इट वट एवर यू लाइक। उसके बाद फारूक साहब गए थे, क्योंकि फिर हमारी आर्मी ने वो किया जो करना चाहिए था। तब जो है, तब ये लोग गए थे कि पहली बार ऐसा हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, आज़ाद साहब आप तो जानते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे आर्मी के, सेना के या नागरिक कश्मीर की बॉर्डर पर न मारे जाते हो। ये इतना सीरियस मामला बन चुका है। तो प्रश्न ये है कि इतनी गंभीर स्थिति के बाद भी कि सारा उनको फंडिंग की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, आईएसआई और वहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को खास तौर से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बरगलाते हैं, तरह तरह के उन्हें सपने दिखाते हैं, ट्रेनिंग के लिए उधर ले जाते हैं और फिर अपने ही लोगों पर हमला करने के लिए उनको तैयार करते हैं। तो असली मामला ये है कि जब तक पाकिस्तान पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक कश्मीर में ये शांति नहीं बहाल हो सकती। आप जानते हैं आज भी कश्मीर में सबसे ज़्यादा मदद जो है, प्रति व्यक्ति मदद जो है, पर कैपिटा मदद, स्पेशल स्टेटस होने के नाते कश्मीर को ही दी जाती है। आप हिंदुस्तान के शेष राज्यों को देख लीजिए, केंद्र से कितनी मदद मिलती है प्रति व्यक्ति, और कश्मीर को देख लीजिए, कई गुना ज़्यादा मिलती। लेकिन क्या उससे कुछ सॉल्यूशन निकला? और पाकिस्तान की समस्या ये है, पाकिस्तान की जनता चाहती है हिंदुस्तान से अच्छा रिश्ते रहें, क्योंकि सबके रिश्तेदार हैं वहां। मैं जानता हूं हमारे इटावा के तमाम परिवार ऐसे हैं जिनका एक भाई यहां है तो एक वहां है, भाई यहां है तो बहन वहां है। और जब संबंध खराब हो जाते हैं तो सब दुखी हो जाते हैं कि शादी होगी वहां, पाकिस्तान में बहन की शादी हो रही, भाई इटावा में बैठा हुआ नहीं जा पा रहा, वीजा नहीं मिल रहा, या यहां हो रहा है कोई कार्यक्रम तो वहां से नहीं आ पा रहा है। तो कोई ये नहीं चाहते हैं कि रिश्ते खराब रहें, आम पब्लिक। लेकिन पाकिस्तान की सेना ये चाहती है कि रिश्ते खराब रहें ताकि सत्ता पर किसी न किसी तरीके से नियंत्रण बना रहे। पाकिस्तान में जो व्यक्ति, जो वहां का प्रधानमंत्री हो या कोई हो, उसको वही बोलना पड़ता है जो वहां की सेना चाहती है, आईएसआई चाहती है। ये स्थिति है। तो और ये आप देख, जो पाकिस्तान गए वो जानते हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी की स्थिति बहुत खराब, लेकिन जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके मकान भी बहुत अच्छे, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, उन पर कोई कानून नहीं चलता, सारा पैसा उनके पास है, और आम आदमी सब तबाह है। क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने के बाद भी, आने के बाद भी, जनता के लोगों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी कोई चलती नहीं। ये बिल्कुल सच बात है। इसलिए ये जो समस्या है इतनी गंभीर हो गई है कि पाकिस्तान
चाहे जो कहे किसी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो हिंदुस्तान में किसी न किसी रूप से अशांति पैदा करने के लिए कोशिश करेगा हमेशा। वो कोशिश कर रहा है कि कश्मीर की जनता को पूरी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ करके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारी, एक स्थिति ऐसी पैदा करे जिसमें उधर से उसकी आर्मी आए, इधर से यहाँ की जनता उसको सपोर्ट करे। ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान की है और वो हमारी आर्मी को, हमारी सीआरपीएफ को सैंडविच कर देना चाहते हैं बीच में। ऐसी स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, जब तक, अब कहना पड़ेगा, जब तक पाकिस्तान को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, कश्मीर का मामला कभी नहीं सुलझ सकता है। आप कुछ भी करते रहिए, आप सिद्धांत की कुछ बात कहिए, सिद्धांत और व्यवहार में बहुत फर्क, सिद्धांत और व्यवहार में बहुत फर्क होता है। सिद्धांत आप कहिए कि हम एम्स बनवा रहे हैं, वहां हमने ये कर दिया, वहां रेलवे लाइन चालू कर दी, क्या फर्क पड़ा? उसके बाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हर रोज बढ़ रहा। जो आजाद जी चीफ मिनिस्टर थे तब था, उससे ज्यादा अब हो गया। आप सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है? पाकिस्तान का टीवी कश्मीर में बाकायदा आराम से हर घर में देखा जा रहा है, उसको नहीं रोक सकते आप। और उसमें क्या चलता है, रोजाना क्या चलता है? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उनको शहीद बना घोषित किया जाता है। यानी 10 जुलाई को एक आतंकवादी को मार दिया पुलिस, हमारी फोर्सेस ने एनकाउंटर में। उसके बाद क्या स्थिति वहां हुई वो हम सब जानते हैं। एक को लीडर था, आतंकवादी था, लेकिन उसके पक्ष में लोग जिस तरह से निकले वो अविश्वसनीय था। आप समझ लीजिए कि किस सीमा तक लोगों के मन में भारतीय फोर्सेस के, भारत के आर्मी के खिलाफ जहर भर दिया गया है। तो जहर जहां से आता है उस रास्ते को आप ब्लॉक नहीं करेंगे और केवल यहां आप ट्रीटमेंट करते रहें तो वो तो आता रहेगा। आप यहां ट्रीटमेंट करते रहें और जहर को नहीं रोकेंगे। आप क्यों नहीं कहते कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो हमारी कश्मीर है, हम उसको हमें वापस कीजिए। आप मांगिए पाकिस्तान से, वो हमारी कश्मीर है। सदर रियासत यहाँ बैठे हुए हैं, तब तत्कालीन इनकी रियासत थी, इनका राज था। पूरा मुजफ्फराबाद और मीरपुर और सब आपका था, हिंदुस्तान का है। जब एक्सेशन हो गया उसको मांगिए, उसको कोई मांगते ही नहीं, कभी बात ही नहीं करते। वो कश्मीर की बात करते हैं और आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसको मांगने की बात क्यों नहीं करते? नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे जब वो कहता है तो आप कहिए कि हमारे हिस्सा पहले ही, ये तब बात करें जब हिस्से को वापस करें हमारे। और ये जब तक नहीं होगा, इस तरह का दबाव नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए उसने स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके एक हिस्से को चीन को दे दिया, अक्साई चीन, और बिल्कुल सीधा उसने रास्ता बना लिया चीन ने वहां आने के लिए। हमारी जमीन और चीन को दे दी अक्साई चीन। तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हर स्टेज पर, और यहां आते हैं, यहां भी आके उसी तरह की बात करते हैं। तो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या और कोई हो, इन सारे लोगों को तो समझाने की कोशिश की गई, हमेशा मीटिंगें हुई,
वार्ताएं हुई, लेकिन ये मामला सब तब फेल हो जाता, लोगों की समझ में भी आ जाए, लेकिन उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो जो आदेश देते हैं उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। अब समस्या ये है कि देश को बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। आंदोलन कहीं होते हैं तो फोर्स को बल प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ये सही है जो कल शरद जी ने कहा था, आज आजाद साहब ने कहा, ये पैलेट गन्स पे तो आप रोक लगाइए, ये नहीं होनी चाहिए। पैलेट गन्स पे पाबंदी लगनी चाहिए। जो और तरह के फोर्सेस जिस तरह का बल प्रयोग कर सकता है और वो ज़रूरत पड़ती है तो करना ही पड़ता है। देखिए, कश्मीर को अगर हिंदुस्तान में बनाए रखना, आज स्थिति ये हो गई, अगर हिंदुस्तान में रखना है तो पूरे कश्मीर की सीमा पर आपको, वो तो चौकसी है ही, लेकिन कश्मीर के अंदर भी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनके लिए उनके खिलाफ बल प्रयोग करना मजबूरी भी है। उस स्थिति में अगर मैं न चाहूं भी और ये कहूं कि नहीं हमारा फोर्स बल प्रयोग नहीं करेगा, तो इसके मानी ये है कि आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये कश्मीर दे दी। एक सर्वे ने, मैं पढ़ रहा था कहीं, उसने कहा कि जब चुनाव हो गया अभी 2014 का, जब इतना भारी टर्नआउट हुआ तो उम्मीद थी कि इसकी वजह से लोग ये समझेंगे कि ये इनका झुकाव जो है वो डेमोक्रेटिक और सिस्टम में है और हिंदुस्तान के प्रति है। लेकिन घाटी के कुछ जिलों में जो सर्वे हुआ उसमें आया कि 75% से लेके 95% तक लोग हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। ये स्थिति क्यों आई? जबकि सारी सहूलियतें देने की कोशिश की गई कश्मीर के लोगों को, इसलिए क्योंकि निरंतर जो दिमाग में चीज भर दी जाती है, दिमाग के से आदमी गाइड होता है, और दिमाग और दिल दोनों अगर जहर भर दिया जाए उसमें तो वो फिर नहीं बच सकता मामला। तो ये है कारण। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, जो रूट है, जो सोर्स ऑफ पॉइजनिंग है, उस पर जब तक स्ट्राइक नहीं करेंगे, कश्मीर के लोगों के मन को प्रदूषित करने वाली बातों के मूल स्रोत पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, जो स्रोत है पाकिस्तान, तो हम कश्मीर में शांति बहाल नहीं कर सकते। इसलिए जो जिस तरीके से हो उस तरीके से आप कैसे, आप बेहतर जाने, आप सरकार में बैठे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से करना चाहिए, आपको करना चाहिए देश को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच राम गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच। श्री नवनीत कृष्णन। Thank you, Honorable Deputy Chairman. I thank Amma. Please listen to me. Kashmir, beautiful Kashmir, Kashmir, wonderful Kashmir. This is a very popular song in one of the films acted by Dr. Puratchi Thalaivar MGR. I again repeat it. Kashmir, beautiful Kashmir, Kashmir, wonderful Kashmir. I would like to inform this honourable House. You cite it in full. You cite it in full. My senior colleague Maitreyan will cite it fully. I can allow him if he is ready. So the songs. Maitreyan, do you like to try? That is his. I leave to his option. Okay. So the Tamil films are very, very popular, which are acted by MGR or any other actors, but shooting should have taken place only in Kashmir. In the background of the Kashmir, any film is taken that is very, very popular in Tamil Nadu. In English, but I don't want to waste that reading all the stanza, because I would like to
make it very clear, Kashmir to Kanyakumari, India is one. Very good. I too belong to Kashmir. Kashmir belongs to me. I want to reveal one secret. A product in English that is called saffron. So I came to know it because in Tamil we call it korosane. That is from Kashmir. Every woman, pregnant woman, is being given because they want to get a beautiful child. So that product from Kashmir is given to each and every pregnant woman in Tamil Nadu. My mother had it, my daughter-in-law had it, definitely my granddaughter will have it. So I belong to Kashmir. I am proud to say it. After seeing the films taken in Kashmir, I wanted to visit Kashmir. That was materialized when I was in the Service Commission. Thanks to Honorable Chief Minister Amma. Only because of her I am able to visit. So then, as a state guest, I visited many places, temples, and then I was provided with very good food. I enjoyed very much. After seeing the agricultural lands, because I belong to Tanjavur, Kaveri Passion, I was under the wrong notion that Tanjavur is the only fertile land. But I changed my view after seeing the lands in Kashmir. And also, the people in Kashmir are very, very, very nice people. I can very boldly quote our leader of opposition and the senior leader Karan Singh, Mr. Karan Singh, because really they are showing, exhibiting real concern for the development of the Tamil Nadu. No doubt about it. Mr. Karan Singh knows each and every part of Tamil Nadu and also the culture and social fabric, everything he knows it. And also, I thank, this is a good opportunity for me, I thank the leader of opposition, Mr. Ghulam Nabi Azad, and Mr. Karan Singh, because they have exhibited real concern for the people of Tamil Nadu when our Amma was undergoing some trouble. So I thank them. So now in India, everybody feels that we belong to everywhere in India. There is no difference. When I was a student, I was studying in AVVM Pundi College. We used to start from Tanjavur, Punnenallur, Mariamman Goil, Nagur Dargah, and Velanganni Church. We pray all the church, mosque, temples. There is no, as rightly pointed out by Professor Ramgopal Yadav, among the people there is no difference. Some mistake is lying elsewhere. So my humble submission would be to this August House that where is the problem? Here really we must find it out and remove the problem. That is the only solution. And also Honorable Chief Minister Amma is known for maintaining our integrity of India. So I urge this August House that the people of Kashmir loving Tamil Nadu, I played a role of the host for more than 15 judges and their families when they visited Chennai as Advocate General. And they wanted to visit Marina Beach, Mamallapuram, Pondicherry. They are fond of seeing the sea. And I arranged all the tour. And they are all very happy. They are in touch with me. And also from Chennai High Court, 2 judges. One of them is the Chief Justice, another one is the senior most judge. So because there is no difference between Tamil Nadu and the Kashmir. Now the people, Tamil Nadu people wants a peaceful, beautiful Kashmir. That is our intention of our Honorable Chief Minister Amma. I pray God that the terrorism was put an end to in Kashmir. I thank you one and all for giving opportunity. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Yeah. Very patriotic and emotional. Good. Now, Sri Derek, I did not call you. You stood up. Eh? Oh, sorry. No. You are welcome. Sri Derek Kubrin. Yes. Sir, before I say even one word about the incidents in the last 1 month which have happened or the discussions we have, and we have lots to say about it. But let me make
one message loud and clear. And that's not for anybody in this house. I must tell our friends in Pakistan, straight talk. Please do not meddle in our internal affairs. Please do not shed crocodile tears. Please do not pretend you have any love for the people of Kashmir. Please do not give my country any bogus lectures on pluralism and democracy. Please do not give us bhashan from your generals, your politicians and your establishment. Because my family knows Pakistan and my family knows India. Because in 1947, when my grandfather worked in Kolkata and his younger brother worked close to Kolkata. So the two brothers were in Kolkata and one brother was in Lahore and he chose to stay in Lahore. That's one side of the family and 2/3 of the family are here, the O'Briens. Today, in spite of all our differences, in spite of all the problems which we face today, we are still the O'Briens of India. We can eat what we want, we can pray wherever we want to, we can walk the streets freely. But the O'Briens of Pakistan don't exist anymore. This is a fact, sir. Yes, there are differences, and in the last 2 years there have been very serious issues. And sometimes there is not only the words which will solve these issues. I wanted to start with the history and then come to the present, but I think I will start with the present and then go backwards in time. So let me start with yesterday, sir, and this is in Trinamool Congress when it comes to matters of foreign policy as our own policy. We are always, whether it's the past, in the last 18 years we've been a party, we've always been with the government in the sense we're always with the country. In that sense, so this is not about winning any political points. But yesterday, sir, it was said by the Honorable Prime Minister that if those boys and girls had books in their hands or laptops in their hands or cricket bats in their hands, it would have been better than stones. So that statement also concerns me, because my concern is that if even those young boys had laptops or books or cricket bats, they would have still thrown it at where they want to throw it. This is the matter of concern, sir. So we need to understand this situation better. And I'll say this, sir. It's one thing when you're sitting in opposition and then you want to play Rambo. And it's another thing when you come here in government. When you come here in government and you have to have the peace and the serenity to be in government. And a lot of the history which I wanted to say, actually Ram Gopal ji, the professor, has said before. But I will not go into the history, but Ram Gopal ji, whatever you said on the history, I am completely on the same page as you as to what you said about whose role, and I don't want to mention too many names here because people get touchy when you mention names. Sir, because this is a human tragedy, sir. This is a tragedy of common people. Who would know Zora Farooq? She's 5 years old, sir. And in fact, she gave what she said when she said in Urdu, which got translated to English, and she said, we don't burn firecrackers at home, but they now burn firecrackers. This was said by a 5-year-old girl, sir. Sir, that reminds me, the nationalist, who is a nationalist and who is a patriot? The nationalist loves his country, the patriot loves the people of this country. And it's very important, sir, at this stage, not to make a distinction between Kashmir, the land, and Kashmir, the people. This is a key this is important, sir. And the paradox of this, and please, this is above politics, so don't get touchy. Interestingly, a few days ago, there was a speech in the Lok Sabha on behalf of the government, and I was intrigued to know who was the voice, who spoke in the Lok Sabha. Because his views on Kashmir 20-25 years ago and today may be a very nice view, it's a good view, and it is often criticized as being a view because he is a Muslim. Sir, I need to bring this point out, sir, today,
because this gentleman believed that Sardar Patel ji also had some views on Kashmir, and even Shama Prasad Mukherjee was a stumbling block. Sir, I welcome the person the BJP chose to speak that day in Parliament. Maybe today it's the BJP and the NDA who are taking a different look at Kashmir. The person who said all these words last week only was MJ Akbar. Now, MJ Akbar is a friend of mine, so I don't want to embarrass him, and this is not the portion to embarrass anyone. But if the BJP is looking at somebody like MJ Akbar, who wrote that book on Kashmir, and I'm not here to publicize his book because he's your minister, it was called Kashmir Behind the Veil. We want to hear voices like this, sir. And the more we hear voices like this, the more we believe that there will be a chance to solve this issue. It's another matter that when this book was launched in 1992, there were many in your party who threatened to burn the book. Sir, let's move on to the Home Ministry. Sir, the Home Ministry today, some of my colleagues are here who are on the committee with me. There is a meeting called today, sir, at 3 o'clock. And for that meeting, we have been given some background details from the Home Ministry. Now, the Home Ministry has given us the details of the use of pellet guns. And I'm reading from that report. It says in 2006, there were 6 deaths and 2010, there were 6 deaths and 198 injuries. And in 2016, there are 3 deaths and 78 injuries or 58 injuries. Sir, we have to go beyond these statistics. Otherwise, for the last 70 years, we've gone this way and that way. We need to go beyond these statistics, because the more and more I'm looking at this, there are other examples of this happened in 2008 and 9. That was the number, and now the number is less. So we have to come out of this mentality, because unless we come out of this mentality, we will continue to. So the government, sir, it's almost like saying there are few injuries now, so we have committed a smaller sin. Sir, it's much beyond that, sir. It's much beyond that. Sir, there is a difference in Kashmir. I was trying to study this in the last 2-3 days. What is the big difference in Kashmir? Let's see, even in the last 10 years. I don't want to go before that. Sir, I want to make one point in 2 minutes about what I think has changed on the ground in Kashmir. And actually, to use the expression on the ground is incorrect. Sir, in 2011, 5-6 years ago, the internet penetration in Kashmir was 3%. Today, the internet penetration in Kashmir is almost 25%. So that is a major change what has happened in Kashmir. And today, if you ask me why the Hurriyat or anyone else doesn't have control over these people, nor can the security forces, because how can you have an encounter with YouTube? You can't. The opinion is being made on the internet. So, Mr. Home Minister, sir, what saddens me also is you tweet out on July the 9th, quote, good tweet, I appeal to the people of Jammu and Kashmir to remain calm and maintain peace. Center is working with the state government. Excellent. But the problem is that when this tweet went out, the internet itself was blocked. So it's a tough call. But the second most, in fact, in Kashmir, the internet has been blocked about 13-14 times. And I understand if you think sometimes, but that's not you're not going to get young people on your side if you keep blocking the internet. The only other state which has blocked it close to 10 times in the last 2-3 years, 9 times, that's in the Western Indian state. You said it. So I'm also saying it, sir, because it's a fact. Sir, so India is non-negotiable. Sir, the Indian is also non-negotiable. So Kashmir is also non-negotiable, sir. But the Kashmiri and her welfare also have to be, sir, non-negotiable. Sir, I'm coming to the issue which actually started all this, Burhan Wani. Now, Burhan Wani is the same issue. I'm going back to the internet. Because Burhan Wani is more dangerous was more dangerous on the internet than he was on the streets.
I believe Burhan Mani is more dangerous in his grave than he was in his living room. And Burhan Mani may be more dangerous dead than he was alive. So, sir, this is the changing situation, sir, in Kashmir. And the way these pellets, that's why I'm saying I'm not going into those home ministry numbers, and we must restrain ourselves. And we are a young party of 18-year-old party. So when we are telling the Congress and the BJP, the national parties, you know, to do this, we are saying this with all humility. Sir, so this needs to be done. Because those pellets, sir, those pellets, you've asked, I want to make a specific recommendation to the Home Minister, those pellets, sir. You have said there are 4 or 5 different kinds of pellets, and I don't want to make this into a pellet discussion. You have asked for 2 months for that expert committee. 2 months is a long time. It's like 32 days for this. There's enough technology. Why 2 months, sir? Make it 2 days, make it 1 week, and let's have that expert committee come, because those pellets are hurting, sir. They are not only hurting the children, but they are also hurting the consciousness of Kashmir. I've never tried this before, but I'll try it only once, because these pellets, I do believe, are hurting the children and also the consciousness. So I'll end, sir, with an Urdu couplet. एक दो जगह नहीं, सारा बदन है चलनी. एक दो जगह नहीं, सारा बदन है चलनी. दर्द बेचारा परेशान है, किधर से उठे. Thank you, sir.